The poem Father to Son is written by Elizabeth Jennings. This poem is about the anguish of a father who doesn't have a good relationship with his son. And this anguish or this lack of relationship is because of generation gap. The son is grown up now and is busy in his own life. And the father is disturbed because there is no communication between the father and the son, and in fact there is a separation in their life. The father and son, although they live in the same house, but they behave like strangers. Now let us try to understand this poem stanza wise. The first stanza reads, I do not understand this child, though we have lived together now. In the same house for years I know, nothing of him so try to build. Up a relationship from how he was when small. Yet have I killed the seed I spent, or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. So, stanza 1 में पोएट अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहता है कि हम अपने बच्चे को समझ ही नहीं पाते, हालांकि हम लोग इस घर में सालों से रह रहे हैं एक साथ। तो सालों से एक साथ रहने के बावजूद भी हम अपने बच्चे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। और इस कुछ न जानने के कारण पोएट के मन में एक पीड़ा है, दुख है कि वाकई में अपने बच्चे के साथ उसके रिलेशनशिप्स क्यों अच्छे नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के वो फिर से सारी चीज़ें याद करना चाहता है और अपने मेमोरी को वहाँ ले जाना चाहता है, जबकि उसके और उसके बच्चे के बीच में कभी अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे, स्पेशली जब वो बच्चा बहुत छोटा था। लेकिन इस बीच उसने अपने बच्चे को जो भी सिखाया, पढ़ाया, जो भी वैल्यूज़ दी, उसको कभी कभी ये महसूस होता है कि क्या उसने जो भी इन वैल्यूज़ के बीज अपने बच्चे में बोए थे, यह समझ करके कि यह मेरा बच्चा है और इसके लाइफ को शेप करना ये मेरा अधिकार है, तो क्या मैंने जो भी कुछ उसको सिखलाया, जो भी कुछ बीज उसके अंदर संस्कारों के बोए, क्या वो बीज उस लैंड पर बोए जो कि मेरा था ही नहीं? यानी क्या उसके जीवन पर मेरा कोई अख्तियार था ही नहीं? क्योंकि अब हम लोग इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, यह फादर कहता है, जहां पर हम लोग जब मिलते हैं और बात करते हैं तो एक अजनबियों की तरह, और ऐसा लगता है कि हम लोगों के बीच में कोई भी समझदारी नहीं है। न फादर सन को समझता है, न सन अपने फादर को समझता है। So we notice that in this stanza the father tries to express his anguish regarding the gap between him and his son. He feels that there is no understanding between him and his son. They have different thoughts, different ideologies. And so he wishes to achieve a friendly and close relationship with his own blood, his own son. But at any cost, anyhow, he wanted to develop or build a healthy relationship with him now. And so he wanted to start recalling those moments when he had good relationship with his son, especially when he was small and innocent. Next stanza. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Silence surrounds us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. तो इस स्टैंजा में हम लोग देखते हैं कि फादर इस बात से दुखी है कि इस बच्चे की परवरिश हमने अपने स्टाइल में किया था। हमने उसमें जो भी मॉरल या जो भी वैल्यूज़ के एजुकेशन दिए थे, या जिस बच्चे को हमने अपने तरीके से पालने पोषने का कोशिश किया था, प्रयास किया था, वह बिल्कुल ही एक अलग किस्म की अलग राह पर चला गया। So here it seems that the father asks himself where he has gone wrong. कहाँ उसने गलती किया कि ये ऐसा हुआ? क्योंकि जब मैंने उसे अपने हिसाब से रेज किया, एजुकेट किया, तो फिर वो जो चाहता है वो मुझे क्यों नहीं समझ में आता?
या मैं जो चाहता हूं वह वो नहीं करना चाहता। और इस तरीके से जो दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसके कारण उन दोनों में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बनता, समझ नहीं डेवलप होती, और नतीजा ये होता है कि उन दोनों के बीच एक अंतहीन चुप्पी स्थापित हो जाती है, अंतहीन चुप्पी डेवलप हो जाती है। दैट्स व्हाई द पोएट सेज साइलेंस सराउंड्स अस। लेकिन अब चूंकि इस साइलेंस के कारण फादर में एक प्रकार से बेचैनी है कि क्यों नहीं उसके और उसके सन के बीच में अच्छे रिलेशंस हैं, और इसलिए फादर अपने बच्चे का प्रोडिगल होना भी बर्दाश्त कर लेगा। प्रोडिगल का मतलब बहुत खर्चेलू, यानी जो बहुत ही ज्यादा पैसे उड़ाता है। तो फादर इसको भी कहता है कि हम इस चीज को माफ कर देंगे, बर्दाश्त कर लेंगे कि मेरा बच्चा प्रोडिगल है। हालांकि यहाँ पर प्रोडिगल का जो रेफरेंस है वो बाइबल से लिया गया है, in which father gives his money fortune to his younger son and the son turns out to be a spendthrift and wastes away all the money in different activities foolishly, and finally when he returns back home he is completely penniless, but the father forgives him and hugs him, embraces him. So when the poet says I would have him prodigal, she has given the reference to Bible of this anecdote. तो कुल मिलाकर के पोएट कहता है कि फादर उसकी वेस्टफुलनेस को बर्दाश्त करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, बशर्ते वो उसके घर में वापस आ जाए। उसके घर में वापस आने का ये मतलब नहीं कि वो किसी दूसरे घर में रहने लगा है, रहते दोनों एक ही घर में हैं, लेकिन वो वहां पर इस तरीके से रहता है जैसे कि वहां नहीं रहता। दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, अगर कहीं सामने आमने पड़े भी तो ऐसे जैसे कि दो अजनबी मिल रहे हों। तो वो परिवर्तन करना चाहता है फादर। फादर वांट्स टू चेंज दिस सिचुएशन और दिस कंडीशन ऑफ कम्युनिकेशन गैप और कन्वर्सेशन गैप। द फादर वांट्स दैट ही एंड हिज सन मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, in the same house. That is, whatever are the causes of gap between them, maybe because of the time gap, generation gap, maybe because of certain ethos or certain values that the father wants to abide by and the son wants to lead his life according to the modern ways. Father wants that in some way or the other both need to, means both the father and the son need to compromise a little, and thus they must evolve a condition, an ideal condition where they both agree and they both live together. They both talk to each other. They both enjoy their life with each other. And if this happens, at any condition, father is ready to forgive all the past mistakes that the child has committed according to him. Even his being a spendthrift or wasteful, the father is ready to forgive. तो इस तरीके से फादर चाहता है कि वो उसे माफ करने के लिए हर हाल में तैयार है, उसकी वेस्टफुलनेस को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उसकी और उसके बेटे की दुनिया एक हो, दोनों कुछ न कुछ समझौते करें और उसका बेटा किसी दूसरी दुनिया में अपनी दुनिया अलग बनाए। इससे बेहतर है कि वो फादर के साथ ही रहे, फादर की दुनिया में रहे और वो दोनों हंसी खुशी एक ही जगह रहकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें। नाउ द लास्ट 4 लाइन्स, ही स्पीक्स, आई कैनॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, longing for something to forgive. So in this poem we saw that so far the son is silent and the father is speaking. He is speaking about his own anguish, but it doesn't mean that the son is not in pain. Son is not in a sorrowful state. Son also bears an equal pain because of this gap, communication gap or conversation gap. So he also in his mind analyzes, and for the first time here it is shown that he too speaks. वह भी कुछ बोलता है, वह भी अपनी ओपिनियन रखता है, अपने मन की बात रखता है. So son says that I cannot understand myself, that what I want, what I do, or why do I do all such things which father
doesn't like, I cannot understand. Even myself, I cannot understand that why unnecessarily I become angry because of my grief. That is, sometimes I become sad and this anger grows out of my grief or sadness. और उदासी का कारण शायद उस घर का माहौल है, उसके फादर के रिलेशनशिप्स हैं उसके साथ, तो उससे जो एक ग्रीफ जनरेट होता है उससे उसे गुस्सा भी आता है कि आखिर ऐसा है क्यों, कब तक ऐसा चलेगा. एंड दिस मस्ट एंड एनी हाउ, देयर मस्ट बी एन एंड टू दिस गैप, दिस रिफ्ट मस्ट बी अब्रिज्ड और फिल्ड इन. और इसके लिए द सन comes up with a solution or a suggestion, you can say, and he says we each put out an empty hand longing for something to forgive. तो अगर फादर भी पुरानी बातों को भूल करके और सन भी पुराने चीजों को भूल करके, पुराने ग्रीवांसेस को भूल करके, दोनों अपने खाली हाथ यानी जो पुरानी चीजों को भुला करके अगर हाथ बढ़ाते हैं एक दूसरे के तरफ और उन चीजों को भूल जाना दोनों एक्सेप्ट करते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर ओल्ड रिलेशनशिप्स may be re-established. Hence this poem ends up in a positive note that the anguish of both son and the father can be reduced or ended completely provided they both extend their hands towards each other, ready to forget each other. Next, the use of figures of speech in the poem. We find alliteration has been used at two places in the poem. Number one, seed I is spent or sown. In this line we find there is a repetition at the beginning and the consonant letter which has been repeated is a S. In seed, S. Spent, S. Sown, S. So the figures of speech is alliteration. Silence surrounds us. Again we find silence begins with S and surround begins with S, and so alliteration is used here too. In silence surrounds us we find another figures of speech which is personification. Silence has been treated as a person that or persons which have surrounded, and thus silence, which is abstract noun, has been considered as a person or as persons which surround, and therefore one can say here the figures of speech used is personification. Next figures of speech used in the poem is metaphor. The seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. The seed and land, they are metaphorically used here. The seed is that of values or philosophy that the father taught to the son, and the land pertains to the son as a person. I hope every point I have discussed in great detail and you all must have understood the poem. Thank you very much. Thank you for watching.